Hello everyone, welcome to my channel. And in this particular video, I'll be sharing the few important questions of quantitative analysis for managerial applications, MCO-22 for December 2023 examination. So it's a new subject, in fact, and it's hard to give accurate suggestions for this particular subject because we do not have much previous data or question paper of MCO-22. So, but still, then I managed to prepare this suggestion for this December exam, and let's see, you get this type of questions. What I like in my experience, what I feel. So unit one, you should prepare this particular question. What are the differences between primary and secondary data? And even MCO 22 and 23, lot of topics are, common. So, and one more plus point of MCO 22 is that like there are less number of units. There are only 16 units. So that is one plus point. Okay, then one more question from this unit, the different methods of collecting primary data. Different methods of collecting primary data and also secondary data. So both the questions are important. And in your syllabus, these four methods are given like this: observation, questionnaire, interview, and telephone. So all these methods have their advantages and disadvantages which you must prepare for the exam. Let's move on to the next important question. How to design a questionnaire? So this particular question. You may be asked to prepare a questionnaire on any one of the topics. So that also you need to, learn. So all these points you can mention in designing a questionnaire. Then one more difference between pilot testing and pre-testing. So this question also you can revise for the test. And the different, the important characteristics of data. Data are the information that we collect through various sources. So all these four ingredients or essentials of data like completeness, consistency, accuracy, and homogeneity. So you can describe all these points. This was I was talking you about like the different sources of secondary data, like published, unpublished, and electronic. So this question is also a very important one. Then let's see. The next question is the precautions in the use of secondary data. As we know that secondary data are collected by some other people. So while using this data, we have to be very careful. So what are the things that we should consider? We should consider that it should suitable to your requirement and it should be reliable. Like the data should be accurate, correct, and sufficient data should be there so that you can properly analyze. Okay. One more question, again, difference between census or population and sampling. So this question is also very common, whatever I have seen in the previous question papers. From unit 2, presentation of data, here you can do what is classification of data and what are the different objectives of classification, why we classify data. So this particular question, then the different types of classification, like these four types are given in your syllabus, like geographical, chronological, qualitative, and quantitative. You might get a difference between qualitative and quantitative classification also, so be very particular. And let's move on to the next question. How to present the data on diagrams, or what are the different types of diagrams and graphs that we use to present the data. So these are four methods. One is bar diagram. Through bar diagram we can present data, we have studied in the statistics. Then histogram, then frequency polygon, and ogive. So you might get short notes also, short notes on any one of this topic, and particularly this last one, ogive. So more than, less than, two types of ogive are there. These two I'm talking about, less than ogive and more than ogive. So these two diagrams, and you need to practice the sums also, numericals. uh,
Unit 3 is measures of central tendency. Here you should revise about like what is this measure of central tendency and what are the important characteristics of measures of central tendency. And then we have the different types of central tendency that we use in statistics. So as many as 7 types of measures of central tendency are there, like mean, then another type of mean, that is weighted arithmetic mean, then median, then quintiles, mode, then geometric mean and harmonic mean. So all these type of measures, their properties, their advantages and disadvantages along with the numericals. So these things you need to practice from this. And in the June exam we got a question from mode, 20 marks question. So you might get any other central tendency from here. Okay, let's move on to the next one. These are few important numericals which you can work out. This one is on mean, and you should use this step deviation formula, this particular formula. So and again for median we use this formula, L plus n by 2 minus CF whole divided by F whole multiplied by C. So these are easier one. We have done this in the school level, college level. So these are not a big factor. Okay, then these are few numericals on median. Then again quintiles. Now again this one is an important one. And again like this, quintiles are divided into 3 types: quartiles, deciles and percentiles. And they have their formulas. So यहाँ से आपको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स, एंड इवन थ्योरी में भी आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस. सो ये आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से. देन वी हैव मोड. मोड के ऊपर जून में आया तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक एनी हाउ. ज्योमेट्रिक मीन पे आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन, एंड इसके ये ज्योमेट्रिक आई मीन फॉर्मूला एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाई एन. सो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं. देन ज्योमेट्रिक मीन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाइक दैट हार्मोनिक मीन के भी मीनिंग, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला. एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दैट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ये तीनों का रिलेशन, इनका इनफैक्ट इनका एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोली जाती है. तो दिस वन इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, दैट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अलोंग विद दिस रिलेशनशिप. ओके, आगे चलते हैं यूनिट 4 में. यहाँ पे है मेजर्स ऑफ वेरिएशन. आपको यहाँ से क्वेश्चन करने हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट वी यूज़. तो यहाँ पे इसके अंदर 4 टाइप के वेरिएशन है. जैसे फर्स्ट टाइप इज रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन, एमडी जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, मीन डेविएशन पे या फिर क्वार्टाइल डेविएशन पे. थ्योरी भी आपको मिल सकती है. सो बी वेरी पर्टिकुलर, प्रैक्टिस करनी होगी आपको. लॉट ऑफ मैथ्स आर देयर. इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्वार्टाइल डेविएशन, इसके अगेन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीन डेविएशन, इनके फॉर्मूलाज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर फॉर्मूला आपको नोट डाउन करने तो यू कैन नोट दिस. सो जस्ट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ये कुछ मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वर्कआउट किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, एंड ये आपके बुक में भी है तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं. एंड उसकी फॉर्मूला सिंपल है, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. So we can use this formula to find out coefficient of variation from mean. Median से भी निकाल सकते हैं. So इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल वर्कआउट करने चाहिए. And one more difference, you can use the difference between coefficient of variation and standard deviation. ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है दिसंबर एग्जाम्स में. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज स्क्यूनेस एंड व्हाट आर द द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यूनेस. तो इसके ग्राफिकल एक बार
इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन की हुआ है डिटेल में, सो यू कैन ऑल्सो वॉच फ्रॉम देयर। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्यूनेस 3 टाइप के होते हैं। द मिडिल वन इज सिमेट्रिकल, लेफ्ट वन इज पॉजिटिव एंड राइट वन नेगेटिव। एंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो टेल्स है वो किस तरफ ज़्यादा कर्व्ड है। सो अकॉर्डिंगली यू विल ड्रॉ द डायग्राम। You can also learn this for a short note, that is coefficient of skewness, जो कार्ल पियर्सन एंड बॉली के फॉर्मूला पे बेसिकली इट डिपेंड्स। एंड वन मोर डिफरेंस दैट यू कैन डू इज द डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बॉलिस। तो ये डिफरेंस भी आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। ओके। ये मैंने यहाँ पे कुछ स्क्यूनेस पे न्यूमेरिकल्स वर्कआउट किए। सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल्स। आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं इस MCO-22 में। यूनिट 5 में देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड जैसा कि मेरे को भी लगता है कि यहाँ पे आपको लाइक प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एंड you should revise ki what is probability and what is the role of probability in decision making or in business management, why we use this, and the different properties of probability and the theories or approaches related to probability. Theories ज़्यादा important है। बेसिकली ये 3 टाइप की थ्योरीज हैं प्रोबेबिलिटी की, जैसे कि क्लासिकल अप्रोच, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, सो यू कैन प्रिपेयर दिस। देन यू कैन गेट वन अनदर क्वेश्चन, दिस बाइस थ्योरम। ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन MCO-22 में आते हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। बेसिकली ये थ्योरम एक्चुअली ये फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर बाइस थ्योरम। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स वर्कआउट किए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में स्ट्राइक किए हुए हैं। सो दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। यूनिट 6 की बात करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बर्नौली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। देन वी हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू शुड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस। देन यूनिट 7 की तरफ चलते हैं। यूनिट 7 इज continuous probability distribution. इसकी like what is continuous probability distribution and its application, how we use this in decision making. So basically ये ज़्यादा application होती है इसकी scenario analysis में, sales forecasting में यूज़ करते हैं, कोई भी फ्यूचर रिस्क को इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर अगेन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको शॉर्ट नोट में भी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देन इसकी ये डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। देन वी हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 8 डिसीजन थ्योरी। नाउ इस यूनिट से यू शुड रिवाइज कि व्हाट आर द चैलेंजेस और इश्यूज इन डिसीजन थ्योरी। जैसे कि ये 4 चैलेंजेस मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, एंड इसके लाइक व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस फॉर दिस डिसीजन थ्योरी। देन अगेन इसके अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस टू डिसीजन थ्योरी। एंड यहाँ पे जैसे कि एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस 4 अप्रोचेस आर देयर। मार्जिनल एनालिसिस, डिसीजन ट्री अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। देन प्रिफरेंस थ्योरी एंड अदर अप्रोचेस। तो ये चारों अप्रोचेस आपको ज़रूर से यू शुड रिवाइज इनके एप्लीकेशंस, हाउ वी यूज़ दिस इन द बिजनेस डिसीजंस। एंड ये अदर अप्रोचेस पे जैसे क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिज्म एंड क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली फॉर द शॉर्ट नोट्स, सो बी वेरी पर्टिकुलर। ओके,
यूनिट 9 में चलते हैं। सैम्पलिंग मेथड से है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ये आपको करना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है, MCO-03 में भी है ये क्वेश्चन। एंड ये दो टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन योर सिलेबस, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। And again इनके advantages and disadvantages like that. Non-probability sampling methods are of 3 types: convenience sampling, judgment and quota. तो ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। वन मोर डिफरेंस दैट यू कैन डू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकता है फॉर दिस दिसंबर एग्जाम। Then we have the different methods of probability distribution. Just now I told you about this. And ये चारों मेथड्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर द एग्ज़ाम। ओके, ये MCO-03 में भी है ये क्वेश्चन। काफ़ी बार मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यूनिट 10 में चलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से है अगेन। Why this sampling distribution is important, like what is the significance in the decision making process. The different types of sampling distributions, ये 3 टाइप के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन अगेन सैम्पलिंग एरर से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स, जैसे कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। And again, non-sampling errors are divided into 2 types: respondent and administrative. So like this, long questions में आपको ये मिल सकता है। एक और शॉर्ट नोट्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन फैक्ट इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, यूनिट 11 में देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ से आपको मिल सकता है इस पे क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। अगेन ये भी शॉर्ट नोट में मिल सकता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एंड नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में मिल सकती है। यूनिट 12 में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काई स्क्वायर टेस्ट, आई थिंक जून में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो जस्ट गो थ्रू दिस। यूनिट 13 में चलते हैं। यूनिट 13 इज़ ऑन बिजनेस फोरकास्टिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनिट 13, बिजनेस फोरकास्टिंग, एंड व्हाई दिस फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर द बिजनेस। जैसे कि कोई भी नए मार्केट, लाइक इफ ए कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इनटू द न्यू मार्केट, सो इट नीड्स टू फोरकास्ट. Then a company can use its resources, I mean economic resources, wisely with the help of forecasting, and long term goals, short term goals दोनों सेट कर सकती है कंपनी। दैन जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनकी अच्छी एडवांटेजेस हम लोग ले सकते हैं ड्यू टू दिस, एंड इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। Then we have the different methods of forecasting. Forecasting कैसे कर सकते हैं? How? Like what are the different methods? So basically these 3 popular methods are there. One is technological forecasting, Delphi and opinion polls. All these 3 methods should be learned properly by you. Important one. Okay. Unit 14 की बात करते हैं। Correlation पे है। What is correlation? The different types of correlation. They are graphical representation. वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे ये 3 टाइप के कोरिलेशन है, इसके डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। सो दिस डायग्राम यू कैन यूज टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोरिलेशन इन द डिसीजन मेकिंग। एप्लीकेशन तो हर चीज़ के आपके एप्लीकेशन यूजेस आपको पढ़ने चाहिए फॉर द एग्जाम। देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। एंड जहाँ पे पियर्सन की ये फॉर्मूला, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकता है फॉर 10 और 20 मार्क्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल वर्कआउट किया है ऑन दिस कोरिलेशन, सो दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली। रैंक कोरिलेशन पे कर सकते हैं, विच वॉज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन। इसके बारे में भी हम लोग पहले काफ़ी टाइम स्कूल कॉलेज लेवल में पढ़े हुए हैं, रैंक कोरिलेशन के ऊपर।
सो इसके भी मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए. दिस पर्टिकुलर फार्मूला वी यूज़, एंड इस पे यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी वर्कआउट किया है. सो ये आपको प्रैक्टिस करने होंगे. एंड लेट्स मूव ऑन टू रिग्रेशन, यूनिट 15. व्हाट इज रिग्रेशन, द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ये क्वेश्चन जरूर से करके जाएं एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट वन. काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं MCO-22 में. एंड वाई रिग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स एप्लीकेशन इन द बिजनेस डिसीशंस. One more question, that is what is least squares and what are the uses of least squares. This question is also seems to be very important. It's application of regression analysis, so this needs to be properly studied. The next unit, unit 16, in fact the last unit, time series analysis. यहाँ पे आप कर सकते हैं कि what is time series and what are the different methods or components of time series, जिसको हम लोग decomposition methods बोलते हैं. तो ये 4 टाइप के मेथड हैं, जैसे कि ये ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिक एंड रैंडमनेस. सो यू नीड टू एक्सपैंड देम. एंड like how we use time series forecasting in business decisions. So these are few important questions which you must prepare for these exams, my dear friends. एंड आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिल सकते हैं. कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी सारे मैथ्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू and will help you in the preparation. Thank you very much for watching this video. A very best of luck for the exam.